So we have started with the concept of maxima, minima of a function of more than one variable, and we are going to extend the concept today. So today we are going to study maxima and minima with a dash of topology. So what do you mean by topology? Topology means geometry or the concept of open sets and closed sets. So let's start what the section says. Sydsaeter and Hammond, section 17.2. Now we will start with the definition of maximum and minimum. So let's understand what they're trying to say. Let f be a function of n variables x1, x2, xn defined over a set S in Rn. So we all know what is Rn. For example, what is R2? R2 consists of elements of this type, x comma y, two-dimensional plane. What is R3? R3 is 3D. Okay, so Rn means we have n dimensions. Okay, so any point will have n coordinates in Rn. So we have a function from, okay, it is defined over S, where S is a subset of Rn. Okay, and it will be defined, it will be generally having a real value, the function. Okay, so suppose C is equal to C1, C2, Cn belongs to S and gives a value of f that is larger than or equal to the values attained by all the other points in S. So for example, so let us denote x is equal to x1, x2 till xn. That is an arbitrary point in S, and C is equal to C1, C2 till Cn is a special or a particular point. Okay, and we have this condition that f of x is less than or equal to f of c for all x in S. What does it mean? It means the value taken by the function at C will be greater than or equal to the values taken by the function over all the points in the domain that is S, which is a subset of R. It means that fx has a maximum value at x equals to C, which is in the domain. But remember one thing, the maxima or the minima must be attained inside the domain only. The point should be inside the domain only. Okay, now since this is happening for all x in S, this is called the global maximum point of S. So till now we were talking about local maxima. So global means the boss of all maxima, the maximum of all the maximums. So that is what is called global maximum. And similarly, we can define, so if I have the functional value at any point x in S is greater than or equal to the functional value at C, and if this is happening for all x in S, then f has a global minimum, okay, on S at C belonging to S. So this is the definition of global maxima or global minima. And these are also known as extreme values. Extreme values means maximum or minimum values. All right. So that is the definition of global maxima and global minima. So always remember one thing, that, you know, if fx is greater, less than or equal to fc for all x in S, this means that minus fx is greater than or equal to minus fc for all x in S. Obviously, when we multiply an inequality with a negative number, the inequality will get reversed. This implies that my function g is equal to minus f. So g has a minima at x equals to c if f has a maxima at x equals to c. Okay, and similarly, if g has, you know, g has a maxima at x equals to c if f has a minima at x equals to c. So any maximization problem can be converted into a minimization problem, and any minimization problem can be converted into a maximization problem by taking the negative of the function which is already given to us. Okay, now let us talk about a useful result, and let me look at this example. Suppose you have a problem, you have to maximize. Okay, so suppose you have a function of two variables fxy, which is e power x square plus 2xy square minus y cube, subject to xy belonging to S. So basically, suppose I'm inside this domain. So suppose my function is defined from S to R, okay, where f x comma y and S is a subset of R2. Of course, you can see that I have two-dimensional plane over here. So where fxy is taking this particular value, e power x square plus 2xy square minus y cube. This value will always be a real number. This is an exponential function. Okay. Now suppose I want to maximize this function. Okay. So remember one thing, that e power x is a monotonically इंक्रीजिंग फंक्शन. हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं करता है. ओके, इफ x is a real number, so the graph is like this. Okay, so e की power x is a monotonically increasing function. What does it mean? It means that if, you know, x is less than x bar, this would implies that, you know, e power x is less than e power x bar. Okay, that is what it means. That means if I'm able to find out the maxima of this particular function, so let us consider the function gxy is equal to x square plus 2xy square minus y cube. So if we can find maxima of gxy at c is equal to c1 c2, for example, then g c1 c2 will be max. Okay, and therefore f c1 c2 will be max.
That means if I have a monotonically increasing function, so if I have composition of a function with a monotonically increasing function, the maximum value of that monotonically increasing function can be found out by finding the maximum value of the function over which it is defined. That is what we are trying to say over here. Okay, so let us try to generalize this through theorem 17.2. It says, let fx equals to f of x1 comma x till xn be defined over a set S in Rn. So it's an n-dimensional function defined on a subset of Rn. And let f be a function of one variable defined over the range of f. Obviously, if f is taking some particular value, suppose if fx is 2, then g should be defined for 2. Okay, then define g over s by g x1, x2. So g is nothing but a composition of this f and this small f. So this small f is one function and this capital F is another function, and g is the composition of capital F and f. Then if capital F is increasing and C is equal to C1, C and maximizes or minimizes F over S, then C also minimizes or maximizes G over S. That we have already seen in case of exponential function. So if I want to find out the maxima of e power something, and if I'm able to find out the maxima of that something which e was raised to, I could find out the maxima of e power something. So basically, if f is increasing, okay, so if this is an increasing function, okay, then maxima of g and f exist at same point, and also minima of g and f exist at same point. Okay, so they are talking about increasing and strictly increasing. So increasing means f of x1 less than or equal to f of x2. Strictly increasing means f of x1 less than f of x2. Okay, so let us roughly look at the proof. We all know the idea through the example that we have taken. Okay, so let us look at part A. Because C maximizes f over the set, we have fx less than or equal to fc. Because at C, maxima of f occurs. What does it mean? It means that capital F fx is less than or equal to capital F fc. Why? Because f is an increasing function. That is the definition of an increasing function. What is the definition of increasing function? X less than y should imply fx less than or equal to fy. In increasing function, we will not have the strict inequality. And this implies that g of x is less than or equal to g of c. So even g will have a maxima at c. And similarly, we can have this for strictly increasing function also. Okay, so this is a very, very important result which you can use for your questions. Okay, like for example, if you have a question that define fxy is equal to log x square plus y square, okay, and you want to find out, so find out maxima of, this thing, log x square plus y square. Now we know that log is an increasing function, okay, logarithmic function is an increasing function. It has a graph like this, okay, so it is an increasing function, and therefore, maxima of x square plus y square will determine maxima of log x square plus y square, and same thing is valid for minima also. Okay, now let us talk about topology. So when we talk about topology in mathematics, topology is all about sets and points. Okay, so I will be talking about topology in plane right now, and I will be explaining you some concepts. So let me start with one dimension and then I'll come to the plane. So basically, in one dimension, we have a straight line. Okay, and we say, suppose A is an element in this particular set. For example, this is my set S. So I know that A belongs to S. Then any interval, any open interval. So what is the open interval going to look like? A minus epsilon, A plus epsilon. That means we generally look at equidistant, intervals, like A is the midpoint. So we can look otherwise also, but let's take A minus epsilon and A plus epsilon. So A minus epsilon and A plus epsilon is called a neighborhood of A. नेबरहुड का मतलब समझते हो? नेबरहुड का मतलब है ए का पड़ोसी. तो ए का जो पड़ोसी है वो सेट के अंदर ही आप लोग देख रहे हैं, है ना? So this is called a neighborhood of A. So now let us try to define what is an open set. So what is an open set in R? ठीक है? So a set S in R is said to be open if for all A in S there exists a neighborhood of A inside S. Now, this is the beauty of this concept. For example, if you have the open interval 1, 2. Open interval 1, 2 means 1 and 2 are not included. So is it open? Is it an open set? Now, if I take any point, suppose if I take any point inside this set, I will always be able to enclose this A inside an open interval, which is inside this outside open interval 1S. And I will be able to do it for all the numbers inside this open interval. That means this is
एन ओपन सेट। आज तक आप इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन में ये ओपन सेट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज, इफ यू लुक एट दिस इंटरवल, okay, so that means my 1 is included and 2 is not included. Okay, now this is not open. Why? So this is not open because if you can see that ये ओपन क्यों नहीं है, ये ओपन इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो 1 है ना, ये 1 इस सेट में है, ठीक है। व्हाट इज माय सेट? क्लोज इंटरवल 1 2। बट अगर आप नोटिस करें, मैं 1 को किसी भी नेबरहुड में इंक्लोज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा सेट के बाहर आ जाएगा। दैट इज वाई दिस सेट इज नॉट ओपन। ओके, नाउ so this is the concept. Now what is a boundary point? So any point inside a set is called an interior point. So now let us define interior point. Okay, so A belonging to S is called an interior point if there exists a neighborhood of A called E such that A is contained in E and E is strictly contained in S. That means इंटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं? जैसे अगर मेरा ये सेट है क्लोज 1 ओपन 2, so 1.5 is an interior point, 1 is not an interior point. Okay, so this is called an interior point क्योंकि 1.5 को मैं बाउंड्री में इंक्लोज कर दूंगी। ओके, 2 तो देखिए सेट में है ही नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं करते। ओके, नाउ व्हाट आर बाउंड्री पॉइंट्स? अगर इंटीरियर पॉइंट की बात हो रही है तो बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं? बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो मैं अगर किसी ओपन इंटरवल में इंक्लूड करने की कोशिश करूं तो आधा पोर्शन सेट के बाहर आएगा और आधा पोर्शन सेट के अंदर आएगा। सो इंटीरियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स व्हिच कैन बी इंक्लोज्ड इनसाइड नेबरहुड्स इनसाइड द बिगर सेट, एंड बाउंड्री पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स if I try to enclose that boundary point inside any open interval or any neighborhood, some part of the neighborhood will be inside the set and some part of the neighborhood will be outside the set. So this is the concept of interior point and boundary point and open set. Now इसी concept को जरा हम 2D में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब 2D में क्या होता है? जैसे आपका ये वाला फिगर, आप सपोज मैंने ऐसे एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाया, सो यू कैन सी दैट ये जो मेरा पॉइंट सपोज ए है, ओके, सो इसका नेबरहुड कैसा होता है? जैसे लाइन पे नेबरहुड कैसे होते हैं? ओपन इंटरवल। वैसे ही 2D में नेबरहुड कैसे होते हैं? सर्कल्स, बॉल्स, दीज आर कॉल्ड बॉल्स, ओपन बॉल्स। Okay, so we can say that they are balls of radius epsilon centered at A. So how do you write ball of radius epsilon centered at A? That is what is meant by neighborhood of A. Same concept. So यहाँ पर open sets क्या होती है? Balls, or they are open circles. I don't want closed circles. Okay, open circle means I just do not have the boundaries. So disk. Okay, now what do you mean by interior point? So interior, so A belonging to S, this is my set S, is called interior point if there exists an open ball with radius epsilon centered at A that is strictly contained in S. अगर मैंने A को एक सर्कल डिस्क के अंदर बंद कर दिया जो सेट के अंदर है तो उसको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब जरा यहां पर आइए, लेट अस मार्क दिस पॉइंट। सो लेट अस मार्क दिस पॉइंट। अगर मैंने इस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट A है, अगर मैं इसको कितनी भी छोटी बॉल में बंद करने की कोशिश करूं ये बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? सो व्हाट इज मीन बाय मेंट बाय ए बाउंड्री पॉइंट? ओके, सो A belonging to S is called a boundary point. और बाउंड्री पॉइंट हो सकता है सेट में हो या सेट में ना हो, ठीक है। ये बाउंड्री इंक्लूडेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे ये ओपन इंटरवल 0 1 है, यहाँ पे बाउंड्रीज हैं 0 1 बाउंड्री पॉइंट्स, बट इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज इंटरवल 0 1 बाउंड्री पॉइंट 0 1 है बट इंक्लूडेड है। सो किसी भी पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट तब कहते हैं if for all epsilon positive A, okay, the intersection of ball with radius epsilon centered at A with S is not empty and the intersection of this epsilon ball with radius A with the complement of S is also not empty. मतलब बाउंड्री पे जो पॉइंट होगा उसका जो ओपन बॉल होगा वो सेट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा और सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब क्लोज सेट क्या होते हैं? क्लोज सेट क्या होते हैं? क्लोज सेट वो होते हैं जो अपने सारे बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। सो अ सेट दैट contains all its boundary points, those are known as closed sets. For example, this is a closed set, this is neither closed nor open, okay, so not closed. अगर मैंने ये सर्कल ले लिया जिसकी बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये क्लोज सेट है। और अगर मैंने ऐसा लिया कि बाउंड्री इंक्लूडेड ही नहीं है, सिर्फ अंदर की चीजें इंक्लूडेड है, तो ये नॉट क्लोज सेट है क्योंकि ये अपनी बाउंड्रीज पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ओपन सेट? एन ओपन सेट इज द वन दैट कंटेन्स ऑल इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करता है। ये देखिए, क्योंकि इसकी बाउंड्री इंक्लूडेड ही नहीं है। क्लोज सेट होता है जो इंटीरियर पॉइंट्स को भी कंटेन करता है और बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंटेन करता है। और ये जो सेट है ये नीदर ओपन है नॉर क्लोज्ड है। ऑलराइट, सो a set that contains
some but not all its boundary points, like the last of those is neither open nor closed. So this is the concept of open and closed sets. And why this is important? Because जब हम ऑप्टिमाइजेशन में डील करते हैं तो जनरली हम कंस्ट्रेंट्स के साथ डील करते हैं. जैसे कि आपसे कोई बोल दे, in many of the optimization problems we consider sets are defined by one or more inequalities and boundary points occur where one or more of these inequalities are satisfied with equality. So आप ये देखिए, हो सकता है कि आपको ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है. So your budget का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, m. तो m becomes the boundary point. ओके अगर इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर और 0 है और p q m तीनों पॉजिटिव है, p q m तीनों पॉजिटिव है, तो सपोज आपके मैं ले लेती हूँ 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू y. सो अगर आप x को 0 रखेंगे तो आपका y आना चाहिए हाफ, और अगर आप y को 0 रखेंगे तो आपका x आना चाहिए 1/3. ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, इस सेट को, ये जो आपको सेट बन के मिल रहा है, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस ट्राइंगल. एंड आप ध्यान से देखिए, मेरे पास इक्वालिटी साइन है, तो इसीलिए ये जो सेट है मेरा क्लोज्ड है. ठीक है, ये सेट बाउंडेड भी है, और मैथमेटिक्स में जो सेट क्लोज और बाउंडेड होता है उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट. सो किसी भी सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं? अ सेट इज बाउंडेड इफ द होल सेट इज कंटेन्ड विद इन अ सफिशिएंटली लार्ज सर्कल. तो ये देखिए, एक सर्कल के अंदर है, इसीलिए बाउंडेड है. ठीक है, अभी देखिए, अब फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं इस सेट को देखो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो दिस इज 1, एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता और x 1 से छोटा नहीं हो सकता. कैन यू सी दिस? नाउ दिस, ये देखो, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये बाउंडेड ही नहीं. तो मैं इसे सर्कल में कैसे बाउंड करूंगी? मैं इसे अगर यहाँ से बाउंड करने की कोशिश भी करूं, मैं कितना भी बड़ा सर्कल बनाऊं, थोड़ा बहुत एरिया, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा एरिया बाहर बच जाएगा. सो ये जो सर्कल है ये बाउंडेड नहीं है. दिस इज नॉट बाउंडेड. ओके, सो आई कैन नॉट इंक्लोज इट इन अ बिग सर्कल. सो 2D प्लेन में बिग सर्कल की बात क्यों की गई है? क्योंकि 2D प्लेन में जो सर्कल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बॉल्स एंड दे आर योर ओपन सेट्स इफ दे डोंट इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट्स. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट टोपोलॉजी इन आर एन. ओके, और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर एन एग्जैक्टली जैसे आर टू होता है, तो अगर दो पॉइंट्स हैं, ए सपोज A1 A2 एंड B1 B2, अगर ये मेरे पास पॉइंट्स R2 में थे, so what is the, this point is called A, this point is called B, so what is the norm of A minus B? Norm of A minus B is nothing but the distance between A and B. So this is the distance between A and B, so which is B1 minus A1 square plus B2 minus A2 square. तो सिमिलरली अगर आपके पास दो n वेक्टर्स हैं, ठीक है, Rn में n वेक्टर्स का मतलब जिस वेक्टर के n कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो उनकी नॉर्म होती है ना, दैट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू वेक्टर्स. अब Rn में कैसे होंगी? Rn में n बॉल होगी. n बॉल का क्या मतलब होगा? जो मेरी बॉल होगी उसका सेंटर होगा A, A1 A2 AN, है ना, और मैं चाहूंगी कि मेरी बॉल में वो सारे पॉइंट्स. अब देखिए, बना तो मैं 2D रिप्रेजेंटेशन रही हूं, बट ये 2D फिगर में, दिस इज समथिंग इन 3D. फॉर एग्जांपल, if I talk about a three ball means I am talking about a ball in 3D. So ball in 3D will be a sphere with a particular center. ये n dimensional sphere है, तो इसका सेंटर ही होगा और इसमें वो सारे x होंगे ताकि जो डिस्टेंस है ये r से कम हो. So this is a ball with radius r and center A. Okay, what does it mean? So this contains all those x in Rn such that the norm of x minus a is less than r. The distance between x and a should be less than r. I don't want x to be on the boundary also because I'm talking about open set. So this is about topology. Topology का मतलब होता है study of open sets, closed sets, bounded sets, compact sets, इंटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स. और इनके नाम इतने खूबसूरत है कि आप खुद ही समझ जाओगे. इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है अंदर की बात, किसी भी सेट के अंदर क्या हो रहा है. बाउंड्री मतलब उसकी पेरीफेरी में क्या हो रहा है. हो सकता है पेरीफेरी इंक्लूडेड है, हो सकता है पेरीफेरी ना इंक्लूडेड हो सेट में. अगर पेरीफेरी इंक्लूडेड है तो सेट क्लोज होता है, अदरवाइज नॉट क्लोज होता है. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.